अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबको चलता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिज़नेस ट्रांजैक्शन के बारे में कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन एक्चुअली होती क्या है और इसे टर्म ट्रांजैक्शन का नाम क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि ट्रांजैक्शन से मुराद क्या है। ट्रांजैक्शन से मुराद ये है कि कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग होगी उसे हम ट्रांजैक्शन का नाम देंगे, या कोई ऐसा बिज़नेस इवेंट जिसको मैयर करने से, ठीक है, जिसको हम पैसों में मैयर करते हैं एंड और जिसे हम अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स कम टू द डेफिनेशन दैट any financial dealing between two person, okay, two or more person, two or more than two, so this can be called as a transaction. So let's come to the point that we're gonna write a definition that any financial dealing between two or more than two persons is known as transaction. That can be also called as a business transaction. All right, so we're going to write the definition. Another definition that we're going to write is that a business event which can be measured in the term of money, or that a business event which can be measured in the term of money and which can be recorded in the book of account is known as transaction. So the transaction can be classified, the further classified, right? ट्रांजैक्शन को हम मज़ीद दो तरह की ट्रांजैक्शंस में देख सकते हैं और ट्रांजैक्शन कैन बी क्लासिफाइड इन द फर्दर टू टाइप्स. So let's come to the classification of the transaction. Classification of transaction. All right, that the transaction can be classified in two categories. The first one is transactions को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं. पहली है हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन और सेकंड है हमारे पास द क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ऑलराइट, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. And now we are gonna further discuss about the cash transaction and the credit transaction. Alright, तो अब हम कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं. तो लेट्स सी. ऑलराइट जी, कैश ट्रांजैक्शन तो ऐसी तमाम ट्रांजैक्शंस जो कि सिर्फ़ और सिर्फ कैश पर हो रही हैं. रिमेंबर दैट ऑल दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर डन ऑन अ कैश. ऑलराइट, तो जिनमें उधार शामिल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन, कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस को हम कैश ट्रांजैक्शंस कहते हैं. ऐसी तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन जो कैश पर हो रही हैं उन्हें हम कैश ट्रांजैक्शंस कहते हैं. तो लिख लेते हैं दैट ऑल दोज ट्रांजैक्शंस which are done on cash, उन्हें हम कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं. फॉर
purchased furniture of rupees 50,000 on cash. हमने 50,000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा है किस पर? कैश पे. सो व्हाट विल बी दैट furniture 50,000, cash 50,000. This is called the cash transaction. This is called the cash transaction. Now, if you just take a look over the credit transaction, this is totally opposite of the cash transactions. All right, means that all those transactions which are done on credit basis. So let's come to the second one, that credit transaction. All those transactions which are done on credit basis. तमाम की तमाम ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो उधार पे हो रही हैं उन्हें हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल दैट वी आर गोना परचेज द सेम, इफ यू जस्ट टेक द सेम एग्जांपल, राइट, दैट वी हैव परचेज्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 50,000 ऑन क्रेडिट. ऑलराइट, दैट परचेज्ड furniture of rupees 50,000 on credit. So what will be the transaction? This is called the business transactions. This is called the credit transactions. All right, that furniture 50,000 debit and account payable 50,000 credit. I hope that you understood this transactions. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रांजेक्शन टॉपिक के बारे में समझ आ गई होगी. तो मज़ीद नए टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए देखते रहिए सब कुछ चलता है. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सब कुछ चलता है. थैंक यू सो मच.